Welcome back to another video, guys, and in this video we are discussing what are non-primitive data types and reference data types. So let's start this video. So we are opening our previous data type file, and in this we learn how to declare a non-primitive data type. So we remove this code, and we know what are the non-primitive data types and reference data types, which do not store the value directly. They have the reference of that data type. Like we know about string. So first we declare a string str is equals to new string, and in this I give hello. Okay, so we declared a string, and after that we have array. So we can create a int type array which is of 100 in size. Okay, so I create an array of 100 size, एंड देन वी नो के ऑब्जेक्ट भी जो है वो रेफरेंस टाइप के नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं. तो हम इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सेम क्लास का डाटा टाइप्स dt नेम दे देते हैं इसे. ओके, सो हमने तीनों डेटा टाइप्स क्रिएट कर लिए हैं और ये नॉन प्रिमिटिव और रेफरेंस टाइप के हैं. बट इनमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि जब हम इन्हें प्रिंट करा के देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन्स. पहले हम इन्हें प्रिंट करा के देखते हैं. स्ट्रिंग then array. Okay, then dt. Okay, now हमें इसे कंपाइल करना होगा. आई थिंक इफ कोड इज विजिबल और नॉट. ओके, नाउ द कोड इज विजिबल. ओके, तो इसे सेव कर देंगे. एंड नाउ हमें कोड को कंपाइल करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट से ही इसे कंपाइल करेंगे. जावा सी, देन फाइल नेम डॉट जावा. फाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो गई है. देन जावा रन करेंगे हम इसे. ओके, so the difference is there that string, when we try to print string, it prints the value of string, and if we try to print the array and the object, they print the reference of that object. So it is the reference of array and it is the reference of object. बट इन द स्ट्रिंग केस व्हाट हैपन्स के स्ट्रिंग जो है रेफरेंस को हम जब ट्राई टू प्रिंट करते हैं तो वो उसकी वैल्यू प्रिंट करता है. इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रिंग एक प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया, बिकॉज स्ट्रिंग इज अ रेफरेंस. लेट्स सी हाउ वी कैन प्रूव दैट. स्ट्रिंग एक रेफरेंस है और वी नो दैट कि हम किसी रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू ही किसी मेथड को एक्सेस कर सकते हैं. सो हम स्ट्रिंग की मेथड है डॉट लेंथ, सो हम उसे एक्सेस करके देखते हैं. ओके, अगर स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है, मीन्स एक रेफरेंस वेरिएबल है, तो ही वो उसकी किसी मेथड को इन्वोक कर पाएगा. इफ स्ट्रिंग इज नॉट अ रेफरेंस वेरिएबल, सो उसके पास रेफरेंस नहीं होगा तो किसी मेथड को इन्वोक नहीं कर पाएगा. लाइक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के पास कोई भी मेथड नहीं होती है, जिसके कारण वो किसी रेफरेंस नहीं होता है तो किसी मेथड को इन्वोक नहीं कर पाते. लेट्स सी, कंपाइल द कोड, एंड हियर द इट प्रिंट्स द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग. सो स्ट्रिंग एक रेफरेंस वेरिएबल है, फिर भी वो उसकी वैल्यू भी प्रिंट कर पा रहा है. सो हाउ इट इज़ पॉसिबल? we are when we discussing string, so we learn about that कि how string is different from other reference data types. So when we try to print other reference variables, so they first they give the class name, and after they say they have some hash code followed by their class name. So that's how we declare our non-primitive data types and reference data types. So that's it for the video. It is the code, you can copy it from there. Okay, thank you for watching this video.